त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकम् प्रेम से सबको प्रणाम। आज से मैं एक नई सीरीज का आगाज करने वाली हूँ जिसका नाम है मृत्युंजय। शब्द से आपको पता चल ही गया कि मृत्यु के बारे में, on death and dying. मृत्यु, death, is a subject that nobody wants to speak upon. Yet it is inevitable that we will all die. मृत्यु के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु कभी होगी नहीं। और इसीलिए जो चीज़ इनेविटेबल है, जो चीज़ होने वाली है, उससे भागना क्यों? उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? जैसे हम दूसरों की कहानियां सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि उनके जीवन में जब मृत्यु आई, कैसे आई, कैसे उन्होंने अपने किसी प्रिय को खोया, how did they deal with it, how did they cope with this loss. जब हम ये सुनेंगे तो शायद हमें स्ट्रेंथ मिलेगी, वो ताकत मिलेगी कि अगर हमारे जीवन में कभी मृत्यु होगी अपने किसी प्रिय की, किस तरह से हमें भी उस चीज का सामना करना चाहिए। You know, friends, we celebrate life. Why don't we celebrate death? जितना प्रिय हमें जीवन है, उतना ही प्रिय हमें मृत्यु को नहीं हो सकती। जिस चीज से हम भागेंगे, डरेंगे, उस चीज का हल हम कभी निकाल नहीं पाएंगे। We will never be able to understand death because we've spent an entire lifetime only understanding life. But the most important and significant part of our life is death, because every day we die. हर रोज किसी न किसी चीज की मृत्यु होती है कि नहीं हमारे साथ? कभी काम चला जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। कभी कोई पैसों का लॉस हो जाता है, थोड़ी टाइम के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। कभी बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है पर अगले साल पास हो जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। शादी नहीं हो रही है, थोड़े साल बाद शादी हो जाती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना एक नियम है, इट्स वन ऑफ द यूनिवर्सल लॉज। कोई भी चीज स्टिल वैसी की वैसी कभी नहीं रहती, ये तो हम सब जानते ही हैं। इसीलिए ये देह, ये बॉडी, ये फिजिकल बॉडी जिसके साथ हम इतने ज़्यादा अटैच्ड है, वो भी हमेशा नहीं रहने वाला, वो भी जाएगा, मेरा भी, किसी और का भी।
फिर भी हम इससे इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि फिर जब मृत्यु के बारे में कोई बात करता है तो हम कहते कि नहीं नहीं, बात मत करो, छोड़ो। मैं कहती हूँ कि विक्ट्री ओवर डेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इस सीरीज का नाम मैंने मृत्युंजय रखा है। जहाँ लोग आएंगे, बात करेंगे अपने बारे में, उन्होंने किस तरह से किसी को खोया, कैसे उन्होंने उस गम के साथ जीना सीखा। कई लोगों की तो जिंदगियां ही बदल गई है उसके बाद। When you listen to such stories, friends, it inspires you, not depresses you. Please remember this. Just like celebrating life stories inspires us. You know, when somebody from rags to riches की कहानियां जब होती है तो हमें इंस्पायर करती है कि और अच्छा करें और आगे बढ़े। इसी तरह से इन कहानियों के साथ भी हम इंस्पायर्ड होंगे। This is my earnest promise to you. When you listen to these stories, you feel elevated. You feel, okay, it's only death. There's nothing to worry about because I never die. हमारी कभी मृत्यु नहीं होने वाली। My soul is never going to die. My spirit is never going to die. My essence is always going to be there because it is infinite. मेरी आत्मा तो अमर है। आज इस शरीर में कर एक दूसरे से जुड़ जाएगी, फिर एक और अलग अलग जीवन में अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हुए वो आगे बढ़े। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस सीरीज के साथ भी आप जुड़े रहें। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी बताना चाहती हूँ अपने बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज मैं आप सबके साथ अपनी कहानी शेयर करूंगी, स्टोरी ऑफ माय फादर। एंड दिस इज वेरी डियर टू मी, वेरी क्लोज टू मी। मेरे पिताजी मेरे गाइड, दोस्त, पिता सब कुछ थे। वो शायद जानते थे कि मेरा काम आगे क्या होने वाला है, और इसीलिए 18 साल की उम्र में उन्होंने मुझे विपश्यना करने के लिए भेज दिया था। उन्होंने मुझे कहा था कि अब आगे बढ़ो, 18 साल की हो चुकी हो, तुम्हें विपश्यना जाना चाहिए। मुझे नहीं पता था विपश्यना क्या है, फिर भी मैं चली गई वहां पर। एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ, माय एटीट्यूड टू लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली। विपश्यना तो एक बहाना था अपने आप से मिलने का, अपने मन के अंदर झांकने का। जिंदगी चलती रही, बहुत सारी सुंदर याद है मेरे डैडी के साथ जुड़ी हुई, पर मैं आज जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 14 नवंबर 1999 का वो दिन जब मेरे पापा की मृत्यु हुई, जब वो ये शरीर छोड़कर आगे बढ़े थे। वो मेरे लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय समय था। It was an unforgettable moment for me. It was Thursday और मेरे पापा और मेरी बातें हमेशा 9 बजे शाम को होती थी, पर उस दिन उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। So I went over and he was lying on the bed और उन्होंने मुझे कहा कि अपना हाथ मेरे forehead पे रखो। He said, keep your hand on my forehead. मैंने जैसे ही अपना हाथ उनके forehead पे रखा, मैंने नोटिस किया कि उनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया था। He was quite cold. मैंने उन्हें पूछा, पापा व्हाट यू डूइंग, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया मुझे। थोड़े टाइम के बाद उनका बॉडी एकदम ठंडा हो गया था। आई वॉज लिटिल वरीड। मैंने कहा कि पापा व्हाट यू डूइंग।
मुझे पता था कि मेरे डैडी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा करते थे. थोड़े टाइम के बाद, after a few moments, he opened his eyes and he said, "Did you notice what happened to my body?" And I said, "Yes, your body became absolutely cold." उन्होंने कहा, "Yes." तुम्हें मैं दिखाना चाहता था कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जब होते हैं तो शरीर के अंदर किस प्रकार से चेंजेस आते हैं. आफ्टर सम टाइम उन्होंने एक दो बार और ये एक्सपेरिमेंट मुझे दिखाया. मैं थोड़ी घबरा गई. मैंने कहा, पापा ये सब चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं. आई वॉज वरीड फॉर हिम. एनीवे, बातें हुई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को लेकर. उन्होंने कहा कि उनका पहला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस 16 साल की उम्र में हुआ था और उसके बाद वो इतने घबरा गए इस एक्सपीरियंस को लेकर कि उनके बड़े भाई ने उन्हें कहा कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं. जब समय आएगा तब अपने आप वो एक्सपीरियंस तुम कर पाओगे और शायद समय आ गया है. मैंने उन्हें पूछा किस तरह का समय आ गया है, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं. उन्होंने कहा, कुछ नहीं. उसके बाद मैं घर चली गई. उनका फ़ोन आया मुझे. उन्होंने मुझे कहा कि फ्राइडे की रात को तुम अपनी बेटी के साथ घर पे आ जाओ रहने के लिए. आई हैड बीन मैरिड फॉर क्वाइट सम टाइम और उन्होंने कभी भी ये जिक्र नहीं किया कि तुम घर पे रहने आ जाओ. नेवर. आई फाउंड इट लिटिल ऑड कि क्यों पापा ये कह रहे हैं कि बेटी को लेकर यहाँ घर पे आके रहो. I was a little, I was a little surprised because Dad never ever told me to come like this and stay at their home. But I decided I think it was the best thing for me. So my daughter at that time was about 9 years old. And we went to my dad's place. Friday की रात बड़ी अच्छी गुजरी. Both of them were chatting and talking, and my daughter was telling him all about school. And मेरी बेटी सो गई, मेरी मम्मी भी सो गई. उसके बाद हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे. He was telling me about Krishnamurti. Krishnamurti, Jay Krishnamurti, उनके दोस्त थे और बहुत सारी बातें हमने कृष्णमूर्ति जी के बारे में कही. मैंने उनको ऐसे पूछा. मैंने कहा, पापा you're 70 years old now, तो 70 years में आपके सबसे सुनहरे पल कौन से थे, सबसे सुनहरे साल कौन से थे. तो उन्होंने मुस्कुराए. उन्होंने मुझे कहा कि the last 3 years. मैंने कहा, अच्छा क्यों last 3 years? तो उन्होंने कहा, बेटे last 3 years में मैंने कुछ ऐसा किया जो हमेशा करना चाहता था. So the last 3 years, my father retired and then he joined the International Yoga Center in Santa Cruz, Bombay. He became a yoga teacher. उन्होंने 9 महीने का teacher training program किया. And he started teaching at the church. And he started teaching at a gym, जहाँ पे young लोग थे, and he would go at 6:30 in the morning and teach them yoga. And he said, ये तो मैं जानता हूँ जो मैंने योगा में सीखा, पर ये लास्ट 3 साल मेरे सबसे अच्छे इसीलिए थे because I did what I wanted to do. मेरी जो पैशन थी. And I said, wow, that's fantastic. उसके बाद हम सो गए. सुबह सैटरडे मॉर्निंग की बात कर रही हूँ मैं, 13 नवंबर की. वो उठे, वो बाथरूम में गए ब्रश करने के लिए. And he fell down. I was right there with him, so I lifted him. मेरी मम्मी और मैंने उन्हें बेड पे रखा. And he was getting a seizure, like a epileptic attack जिसको कहते हैं, fit जिसको कहते हैं. But I knew कि ये fit नहीं थी. इतना तो मैं जानती हूँ fit कैसे होती है. I knew कि कुछ हो रहा है पापा के साथ में. But I didn't know what exactly was happening to him. We made my dad lay down on the bed. उन्होंने कहा कि तुम्हारी सिस्टर कब आई. मेरी सिस्टर lived at that point in the USA. तो मैंने कहा कि पापा रोमा तो नहीं आई है. मेरी सिस्टर का नाम रोमा है. मैंने कहा रोमा तो नहीं आई है. तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही तो है वो. That's when I realized that he was having some kind of experience. Something was happening to him.
मैंने अपने कजिन ब्रदर को कॉल किया, उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस केम एट 7:30 और हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे फादर की बहुत सारी टेस्ट हुई। आई वाज विथ हिम द होल डे। MRI हुआ, ECG हुआ, पर सब कुछ ठीक था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। डॉक्टर ने मुझे आकर कहा कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है आपके फादर को। मैंने कहा बट देयर इज समथिंग रॉन्ग। ही सेड वेल वी कैन फाइंड इट, लेट्स जस्ट कीप हिम फॉर अ डे एंड काइंड ऑफ ऑब्जर्व हिम। उन्होंने बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस बताई मुझे। मुझे पता था ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पापा को। एनीवे आई जस्ट लेट इट बी। सैटरडे रात को मेरी मम्मी आई हॉस्पिटल में और उन्होंने रात को वहाँ पे रुकी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं 7 बजे हॉस्पिटल पहुँच गई थी मम्मी को रिलीव करने के लिए। तो मम्मी ने मुझे एक बहुत ही यूनिक बात बताई। उन्होंने मुझे कहा कि पापा पूरी रात ये बोलते रहे कि वो अपनी मम्मी को देख रहे हैं, अपने पापा को देख रहे झूले पे बैठे हुए, अपने फूई को देख रहे हैं, उनकी जो फादर की सिस्टर थी उनको देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग उनसे बातें कर रहे हैं, उनको अपने पास बुला रहे हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली मेरे फादर ने अपनी मम्मी को कभी नहीं देखा, क्योंकि उनकी मम्मी की मृत्यु उनके जन्म के वक्त ही हो गई थी। So he has never seen his mother. His father, of course, passed away many, many years before that. And the aunt who actually raised him and his 3 brothers also had passed away many years ago. He told my mother, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को ये कहा कि तुम एक वीडियो कैमरा मंगा दो और ये मैं वीडियो करना चाहता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। Of course, मेरी मम्मी तो कुछ नहीं देख पाती थी. My dad was in a different reality than my mother, is what I realized. पापा के साथ सुबह का समय था मेरा. We just sponged him a little bit. मैंने उनको कहा कि आप कुछ खाना खा लीजिए. He said, no, I don't want to have breakfast. उसके बाद मेरी कज़न सिस्टर है जो रक्षा, she came over. हम लोग हॉस्पिटल के कमरे में थे. मेरे पापा बेड पे लेटे हुए थे, मैं इस तरफ, मेरी सिस्टर इस तरफ थी. उस वक्त जो मैंने महसूस किया और ऑब्जर्व किया, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ. मेरे पापा मेरी सिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, रोमा, जो यूएसए में थी. वो मुझे बता रहे थे कि उसका घर कैसा है, उसका इंटीरियर कैसा है, फ्रिज के ऊपर किस तरह के मैग्नेट्स लगे हुए हैं, उनके खुद का फोटोग्राफ कहाँ रोमा ने रखा है, कौन से टेबल पे रखा हुआ है. उन्होंने मुझे बताया कि किचन की लाइट ऑन है और वो अपनी दोस्त के वहाँ गई है. उन्होंने मुझे बताया उस दोस्त का घर कैसा है, दोस्त का नाम क्या है, और मेरी सिस्टर ने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे. All this information he was telling me lying in that hospital bed. That means his soul has teleported. Teleportation is a phenomena जिसको कहते हैं जहाँ पे आपकी आत्मा एक टाइम एंड स्पेस को छोड़ते हुए, वक्त और समय के बंधन को तोड़ते हुए एक ऐसी जगह के पास पहुंच जाएगी और वहां से वो इंफॉर्मेशन लेकर यहाँ आ सकती है वापस. And that's what my father was doing. He was teleporting constantly. 2 घंटे का समय था. My sister and I, my cousin and I were standing opposite, and we were listening to him telling us everything about my sister's house, about where she was, what she was wearing, all the information he was giving to me. Not only that, my father gave us a lecture on Sthit Pragya, how to be in the middle path, how to balance yourself in life. It was the most beautiful and amazing moment of my life. When I think about it today also, I think I have tears in my eyes. It was a moment of bliss. मुझे पता था कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा जो शायद हमने सोचा भी नहीं था. My father, after some time, जैसे वो बोलते गए,
Teleportation ke waqt, what exactly was happening was he was talking to us, and after some time he would become quiet, completely quiet. मुझे लगता था क्या हुआ, and then I would shake him a little. He would say नहीं मैं तो नहीं हूँ, and then again he would speak. इस तरह से 2 ढाई 3 घंटे चलता रहा ये सिलसिला, जहाँ वो शांत भी हो जाते थे, क्वाइट भी हो जाते थे, फिर वापस बोलते थे, फिर वापस क्वाइट हो जाते थे. It was the most amazing satsang that I've ever had with the soul. After that, my aunt came in with some pohe, and उन्होंने कहा कि पापा को थोड़ा सा खिला दो. उस वक्त मेरे पापा ने मुझे कहा कि कमरे में बहुत सारा रोशनी है. There is a lot of light in this room. The stupid mind of mine thought that the tube light is hurting my dad's eyes. So I put a napkin on his forehead. मुझे लगा कि शायद ट्यूबलाइट का प्रकाश उस नैपकिन से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, and he'll be able to not see so much of light, but that was not to be. वो प्रकाश, वो रोशनी, वो लाइट ट्यूबलाइट की नहीं थी, शायद उनके खुद के अंतरात्मा की थी. Moment I put the napkin on his forehead, he told me the path is clear. I can still hear the voice, him telling me that the path is clear. The very next moment, the monitor showed a straight line. He was gone. This experience was so profound for me that it shook me from within. It made me realize the power of the soul. It made me realize what it is to die, what is death, what is life, and what is death. And my sister had no idea that my father was in the hospital because हमें नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी जाएंगे. We just took him for a checkup. मैं नीचे गई अपनी सिस्टर के साथ, कजिन के साथ. मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, and it took about few minutes for her to pick up the phone. When she picked up the phone, I had no courage to tell her. So I asked her, "Are you coming back from this particular friend's house?" She said, "Yes." I said, "Have you worn a dress which is black in color with straps?" She said, "Yes." I said, "Is your kitchen light on?" She said, "Yes." I said, "Have you placed Dad's photo on a circular table in your living room?" She said, "Yes." I said, "Have you got these kind of magnets on your fridge?" She said, "Yes." She said, "Where are you? Are you at my house?" I said, "No, I'm in the hospital." "How do you know all this?" she said. And I said, "Dad told me." And she said, "What do you mean?" And I said, "Well, Dad just teleported all the way to the US in New Jersey and gave me all this information." She said, "What are you saying?" And I said, "Dad's moved on. He is no more in the physical body." Of course, that broke her completely. But then that was the truth. I can never forget that day ever in my life. But what happened next was even more amazing for me. And that happened a month later. I want to share with you what we call a shared death experience. It's called an SDE. आपने NDE के बारे में सुना होगा, near death experience जिसको कहते हैं. But this is an SDE, shared death experience. A month later, I was lying in bed, and it was about 2 o'clock in the night. Suddenly, मेरी आंखें खुलती हैं, and I see lots of light in the room. I thought shayad lamp on. So I shake my husband. He's deep in sleep. And I realize that there is no light in the room, physical light.
but there is light. An astral light is getting projected from the top of the ceiling. Ceiling से नीचे मेरे bed की तरफ there was a tunnel of astral light. I was stunned. I turned to that light, and in that light, I could sense a figure of my father. It was crystal clear. I could sense as if the figure is filled with light. It is illuminated, prakashmay. Yahi nahi, I could sense his face, but it was translucent face, not physical. Not only that, I could sense that on the top of my dad's head was a peacock feather. उस वक्त भी मैं सोच रही थी, my father was bald, he had no hair, right? How is this peacock feather even being balanced on top of his head? And then I could sense कि उनका पूरा astral form vibrate कर रहा है. It's got a billion lights inside it. And I could sense him smiling at me. I thought I was hallucinating. Have I gone crazy or something like that? But no, it's so real. I even pinched myself, to see whether I'm awake or I'm dreaming. मैं वो कभी नहीं भूल सकती. And I could hear him because मैं basically clairaudient हूँ. मैं सुन सकती हूँ ज़्यादा of the other side. And I could hear him telling me, I'm going to guide you from now on. Listen to me. और उस वक्त जब उन्होंने मुझे ये कहा, within a few fraction of a second, वो पूरा फॉर्म जो ट्रांसलूसेंट था, उसमें बिलियन स्टार्स थे, ये सारे सितारे थे, चमक रहे थे. वो जैसे वाइब्रेट करते 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 वो लाइट जैसे सीलिंग की तरफ चली गई and it went away. The room was still filled with light. कमरे के अंदर इतना ज़्यादा प्रकाश था तभी भी. My husband somehow turned and said, light बंद करो. I couldn't even tell him that there is the light that I am seeing is got nothing to do with the bulb. इस एक्सपीरियंस के बाद मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई. शेयर डेथ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं. शेयर डेथ एक्सपीरियंस के बाद जो व्यक्ति जीवित है उसकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आता है शायद उसने कभी नहीं सोचा था. मेरी जिंदगी, my work became multifold. It just zoomed higher and higher. Past life regression came into my life in a huge way after my dad passed away. He guided me to the right teacher. He guided me to the right books. He guided me by speaking to me, by letting me know what the purpose of my life is. There are times जब मैं sessions करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगी, and I can hear him speak to me and say this, do this, move like this. मेरे पापा के जाने के बाद और ये एक्सपीरियंस के बाद मेरे फादर मेरे सपने में कभी नहीं आए. He never came in my dreams ever till 2006. 2006 में 5:30 बजे I had a dream in which I saw my uncle who was at that point quite sick. मेरे फादर के बड़े भाई. सपने के अंदर मैं देखती हूँ मेरे फादर के बड़े भाई और मैं
एक ईरानी रेस्टोरेंट जहाँ मैं बचपन में जाया करती थी बैठे हुए हैं, और हम दोनों बातें कर रहे हैं. उसके बाद मेरे अंकल बाहर आते हैं एंड ही टेल्स मी गुड बाय एंड आई सी हिम क्रॉसिंग द रोड, और दूसरी तरफ एक रॉकेट नुमा कोई शिप है, लाइक अ रॉकेट शिप और स्पेस शिप, जिसके अंदर वो बैठते हैं, मुझे बाय बाय कहते हैं. मैं टर्न करती हूँ लेफ्ट में, 2 कदम बढ़ती हूँ. आफ्टर 2 steps आई सी माई फादर. For the first time after 1999, I see him coming towards me. मैं कहती हूँ पापा आप कब आए? मुझे कहते हैं 777, 3 times 7 मुझे कहते हैं. And I realize that he knows कि मैं न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, इसलिए शायद मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं नंबर्स के द्वारा. शायद इसका मतलब था कि 7 जुलाई को उनका जन्म वापस हुआ होगा. आफ्टर दैट मैंने अपने पापा को अगेन कभी नहीं देखा सपने में. टुडे इट्स 2020 and I can only say that I've understood death through the death of my father. I think it's very important to understand death when somebody dies, because जीते हुए तो हम कभी भी मृत्यु के बारे में सोचते नहीं हैं, पर जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बारे में ही सोचना शुरू करते हैं. I wish to thank my father because it is his intention of helping me, his intention of making me understand what death is all about, to make me understand that life can be celebrated and so can death. I want all of you to celebrate life, but not forget to celebrate death. I'm going to read a poem that I wrote for my dad when he passed away. 14th November 1999, जब मेरे पापा की मृत्यु हुई, मैंने रात को कविता लिखी जो मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ. It's in English. Losing Dad. The astral space seemed to swirl, floating, fuming in a far-off world. Daddy dearest didn't wait to stop and think at heaven's gate. Should I leave this heavenly abode, depart from loved ones who need me the most? Choice, which we never seem to exercise, was needed in that hour of life. Did he have to? No, he didn't. Yes, he said to the silent wind. Droplets of water wet his lips as brightness entered, dilating the rims. A glassy covering encased his eyes, seeing a world which was not mine. Stepping into an unknown land, Daddy and I traveled hand in hand. Tears brimmed in my eyes, but waited within for a while. For hope, my only friend, clung fearful till the end. Unable to recall his name, which gave him an identity in life's long lane, Daddy gave it all up for the elusive oasis in the eternal cup. Towards a maze of desert sand, dry, chapped, and thirsty, I moved in and about watching, waiting to hear air inhale itself to life. But somehow things were going wrong. Whispering beat the monitor call. The galloping heartbeats randomly raced, indicating the aortic fall. The nurse insisted all is well, yet in my mind chimed the knell. Call the doctor, I heard myself say. Daddy lay quiet, as if resigned to pray. Seconds later, wanting to go, he indicated the need to throw. A kidney tray was put before, ballast akin liquid poured, flooding the oral fjord. The alarm augmented around, piercing, displacing the ventricular sound.
Shaking limbs fell like bricks, the ruined state of a beloved lay amidst the ebbing cardiac bay. Years of memories whizzed past, flashback raced my mind's path. It is true, I heard myself say, there is death, it's no play. A loved one can just depart, never to return to light up our hearts. No, it can't be happening to me. Daddy dearest can't just not be. He will always be there to care and guide, share and philosophize. But I stood holding myself, clenching my fist to shake him out of his shell, kissing him on his forehead, cold, wished he would get up and for once scold. But he lay shrouded in white, didn't tremble or even fight. Maybe it was time for him to fly and for us to wish him a goodbye. Thank you so much for listening to me. And I hope that our guests that will grace MRITUNJAYA, you will listen to them too. Just like life is to be celebrated, death is equally beautiful. अगर हम जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं तो शायद मृत्यु को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए. जिस तरह से जिंदगी खूबसूरत है, शायद मृत्यु भी उतनी ही खूबसूरत है. जितना ज्यादा हम जिंदगी को एक्सपीरियंस करते हुए सीखते हैं, शायद मृत्यु भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है. So please do join me on MRITUNJAYA. Stories of death and dying, real experiences of people. And I'm sure all of us are going to learn immensely. Wisdom is in death as wisdom is in life. Join me on MRITUNJAYA. Thank you. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.